how to change some sentences in present indefinite form. This video, which is according to the syllabus of the board examination for class 9 and 10. Class 9 or class 10 board exam question number 3. Do as directed. Do as directed as instruction given in the brackets. Question number 3. Write board examination paper. Try to understand. उर्दू में बहुत आसानी से समझिए. तमाम जुमले किसी भी टेंस में हो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह तब्दील करेंगे, उसका क्या तरीक़ाकार है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट what is the structure formula of the present indefinite. In present indefinite, subject comes in the beginning of. सबसे पहले subject आता है. एक present indefinite का जुमला I write a letter. सबसे पहले subject, फिर उसके बाद write, उसके बाद verb आया, उसके बाद object आता है. ठीक है, याद रखिएगा. I write हो सकता है, बिल्कुल सही है. You write बिल्कुल सही है. We write बिल्कुल सही है. They write बिल्कुल सही है. लेकिन ही राइट बिल्कुल गलत है. ही राइट्स होगा, शी राइट्स होगा, अहमद राइट्स होगा. राइट प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में होगा तो आपने उसको क्या करना है, वर्ब के साथ इस लगाना, राइट्स. ठीक है, तो अब आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर. ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब मुख्तलिफ टेंसेस के जुमले बोल रहा हूँ, उसको मैं तब्दील करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो क्वेश्चन नंबर 1, आप अपना नोटबुक तैयार कर लें और उसमें लिखते जाए. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्वेश्चन नंबर 1, आई हैड रिटन अ लेटर. इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैड रिटन अ लेटर. यू हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई राइट अ लेटर. Fatma had sung a song. Fatma sings a song. She had cooked food. She had cooked food. She cooks food. The children are playing cricket. The children are playing cricket. The children play cricket. The child was flying a kite. The child was flying a kite. The child flies a kite. She spoke English. She speaks English. I waited for you. I wait for you. She had waited for me. She had waited for me. She waits for me. My father has gone to office. It is present perfect. My father has gone to office. My father goes to office. My mother is buying fruits. Present continuous. My mother is buying fruits. My mother buys fruits. The dogs were barking. The dogs were barking. The dogs bark. It is raining. It rains. We had played cricket. We had played cricket. We play cricket. Fatma have sung a song. Present perfect. Fatma has sung a song. Fatma sings a song. Right? Ahmad caught fishes. Ahmad catches fishes. Tanveer have cooked food. Tanveer has cooked food. Tanveer cooks food. She drove a red car. She drove a red car. She drives a red car. I am catching fishes. I am catching fishes. It is present continuous. I catch fishes. The gardener had watered the plant. The gardener
waters the plant. The gardener will water the plant. The gardener waters the plant. The gardener will water the plant. The gardener waters the plant. We are working hard. We are working hard. We work hard. She spoke English. She speaks English. Anabia ate mangoes. Anabia ate mangoes. Anabia eats mangoes. Anabia is eating mango. Anabia eats mango. Anabia was eating mango. Anabia eats mango. Anabia will eat mango. Anabia eats mango. These are the way that how you change the sentences into present indefinite tense. And I think आपने मेरी बात समझी होगी. उसके बाद आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब्दील करने का तरीका आपको बता चुका. अब आपने नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आप सुनेंगे किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में जुमलों को तब्दील करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.